Hello friends, so in this video we're gonna start with part 2 of Indian Constitution which talks about the citizenship. First thing first, हमारा इंडिया कैनेडियन मॉडल को फॉलो करता है, कैनेडियन मॉडल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप. इसका क्या मतलब है? जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है फॉर एग्जाम्पल वो ड्यूअल सिटीजनशिप फॉलो करता है. दैट मीन्स अ सिटीजन ऑफ अमेरिका इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया, फॉर एग्जाम्पल एरिजोना. सो अमेरिका डुअल सिटीजनशिप फॉलो करता है, वेयर एज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है एंड इट इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल. दैट मीन्स इंडिया में ये नहीं होता कि दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज सिटीजन ऑफ कर्नाटका. इधर ऐसा नहीं होता, यू आर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया. दैट मीन्स हम सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू अमेरिकाज डुअल सिटीजनशिप. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉर्मली जो सिटीजनशिप का मैटर होता है इट इज यूजुअली डन इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन, बट हमारे केस में इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. बट ऐसा क्यों है? बिकॉज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो रहा था, सो स्वैपिंग ऑफ पॉपुलेशन हो रही थी उस दौरान. सो द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड इट फिट कि वो इस मैटर को, सिटीजनशिप के मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनकॉर्पोरेट कर दें. नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट वी शुड नो द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सिटीजन्स as well as aliens. Who are citizens? Citizens are basically who enjoy full civil and political rights, whereas who are aliens? Aliens are basically foreigners. Now, aliens do not enjoy certain fundamental rights. These are Article 15, 16, 19, 29 and 30. ये आर्टिकल्स aliens enjoy नहीं करते हैं. Further, aliens are of two types: friendly aliens and enemy aliens. The citizens of those countries with which we have friendly relations, those are friendly aliens, whereas the citizens of those countries with which we are at war, they are known as enemy aliens. So if we further talk, बोथ फ्रेंडली एलियंस तो ये सारे आर्टिकल्स या ये सारे फंडामेंटल राइट्स इंजॉय नहीं करते हैं. एनिमी एलियंस इन ये सारे तो नहीं करते हैं, बट इनके साथ साथ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2 भी इंजॉय नहीं करते हैं. दे बेसिकली गिव सेफ गार्ड अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. द पॉइंट वी शुड नो इज an Indian citizen can also become an enemy alien. An Indian citizen can also become an enemy alien अगर वो voluntarily trade करता है या voluntarily reside या stay करता है उस country में जिसके साथ हम war पे हैं. So an Indian citizen can also become a foreign alien. So this was the categorization we did. To sum up, we follow Canadian model of single citizenship. Ours is not a legislation, rather it is incorporated in the constitution itself. The population is divided into citizens and aliens. Aliens does not enjoy these fundamental rights. Aliens are further categorized into friendly aliens and enemy aliens. Enemy aliens are the citizens of those countries with which we are at war. In addition to these articles, these fundamental rights are also not enjoyed by the enemy aliens. And the last thing, a citizen of the country, an Indian citizen, can also become an enemy alien in certain conditions. So what is the importance of citizenship? Basically, it determines person's full political membership in the country. And the second point, it basically determines give and take relationship between individual and state. Give and take relationship between individual and state. The state gives certain fundamental rights, whereas the individual is bound, or individual has the duties named as fundamental duties to abide. So under Article 11, it confers unfractured power to whom? Unfractured power to the Parliament
in the matters of citizenship. So under Article 11, it gives or confers unfractured power to the Parliament regarding all the matters of citizenship that can be, how it can be acquired, how it can be terminated, or all matters related to the citizenship. So this was a brief summary about citizenship. In the next video, we're gonna see the different ways by which we can acquire the citizenship as well as the ways in which we can lose the citizenship. Thank you. I hope you like this video.